Hello dear students, welcome back to my channel. Students, today in this session we discuss the chapter Electric Currents and Circuit Class 6 Science Devi Public School. So let us start the session. Students, do you know that electricity is all around us even in nature? That is, lightning during a storm is a powerful example of natural electricity. How it happen? It happen when the electric charges in the cloud move suddenly and creating a bright flash is called lightning. And also we know some sea creature like the electrical eel can produce electricity in their body because they defend themselves or catch the prey. Okay, so now let us understand what is electricity. So tell me, what is electricity? Now electricity is a form of energy that helps to do many things, like it power up our homes, school, and even the device we use every day like mobile phone and computer. Yes or no? In simply word, we can say that electricity is the movement of the tiny particle called electron. When these electrons moves through a material like a wire, we call it electric current. Then what is electric current? Now the flow of electricity along the path is called electric current. Then what is the unit of the electric current? This is called ampere. You remember, simply you can write A. Then what are the sources of the electricity? Now we get electricity by burning of coal, or from the wind using the windmill, from the moving water using the turbine, from sunlight using the solar cell. Okay, nowadays solar cell very use. From the chemical using the cell or battery, तुम जो टॉर्च जो आम यूज करछे जो बैटरी अच्छी तादे आम इलेक्ट्रिसिटी आम बाहर कर परिबा. yes or no? Now electric cell. Then what is electric cell? Now electric cell is a simple source of electricity. It produces electricity from the reaction between chemicals. It was invented the Italian scientist, that is Alexander Volta, in the year 1800. Okay, remember. Now solve these questions. Name the constituent of the atoms. It solve ko douchi. There are the three constituents of the atoms are there, that is electron, proton and neutron. Then which constituent of the atom can move? That is electron. This electron is called electric current. Okay, now coming to the next concept, that is dry cell. Then what is dry cell? Now you remember that cell that has semi-solid or dry chemical is called dry cell. And remember, a dry cell is in cylindrical shape. It has a metal cap and that raise at one end and the metal base with a groove or depression at the other end. Means gote emti height bala hitbo, gote emti groove thibo. Okay, every cell has two end, that is called terminal. This is called positive terminal, another is negative terminal. Okay, the container is made up of the metal zinc and is called the negative terminal. माने जोटा metal zinc हेतिबो ताको हमें कहबा negative terminal, that is marked as minus, and the metal cap is fitted on the top, this marked as plus, and connected to the marble carbon rod. Okay, inside the cell it is called the positive terminal. माने there are the two terminal, one is negative and another positive. Negative टा का सहित connect थिबो metal zinc सहित, positive टा connect थिबो carbon rod सहित. Okay, and the moist paste ता भितर गोटे पेस्ट बाकी केमिकल थिबो. को केमिकल मन रखिबो? अमोनियम क्लोराइड and the manganese dioxide fill with space between the carbon rod and the zinc separator, zinc container. A dry cell is called the primary cell because it has to replace after the all the chemical are used. जब chemical सब completely use हो then you can replace it, means battery में change करिबा. yes or no? Now when the terminal are connected to the wire, a chemical reaction produced in the electric current. In the electrical cell, chemical energy is converted into the electrical energy. We already know about in work and energy chapter. A collection of cell is called battery. Remember, one cell is called electrical cell. Means more than one cell is called battery. Actually हमें जो battery use करते हैं ताते कौन था? Number of cells था. Okay. Now so other types of the cells are there. This called the secondary cell. Means यही सेल को आम कौन कर यूज कर अगेन मीन केमी ना रिचार्ज करी
जोटा आम मोबाइल फोन यूज करछे मोबाइल फोन सोलार सेल्स लैपटॉप बैटरी दीज आर कॉल्ड सेकेंडरी सेल मीन्स ए सेल को आम कौन कर रिचार्ज करके फिर एगेन एंड एगेन ताकू यूज कर पारिबा ओके सो दिस इज द diagram of the battery about dry cell this is carbon okay this is carbon electrode this is zinc casing and between a कौन chemical से chemical कौन गोटे हो जामर ammonium chloride another is manganese dioxide this is negative terminal okay this is the outer covering or protective covering okay so next now the difference between primary cell and the secondary cell so what are the difference first difference is primary cell are non rechargeable yes or no and the secondary cell are rechargeable okay and example remember okay now these are some questions solve this now coming to the next that is electric bulb okay some the type of bulb likhithibo yes or no so a electric bulb use electric current to provide light माने आम इलेक्ट्रिक बल्ब कहीं यूज करबा ना बिकॉज इलेक्ट्रिक करंट आम जो प्रोवाइड करबा सेटा कोथरे कन्वर्ट हो जिवो ना लाइट एनर्जी रे कन्वर्ट हो जिवो नाउ एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज ए थिन कॉइल वायर ता भीतर गोटे थिन कॉइल गोटे वायर थाए दिस वायर इज कॉल्ड फिलामेंट एंड दिस फिलामेंट इज मेड अप ऑफ ए मेटल दैट इज कॉल्ड टंगस्टन तो आम टंगस्टन ही कहीं यूज करूचे ना बिकॉज टंगस्टन इज ए हाईली मेल्टिंग पॉइंट मीन्स हाईली मेल्टिंग पॉइंट मीन्स जो गरम हम कहीं आम बल्ब करेन्ट दबा माने हिट हम हिट हबार से कौन ना ग्लो करुच हिट हेल्ले से कौन मेल्ट हेनी दैट्स व्हाई इट हैज हाई मेल्टिंग पॉइंट से आम टंगस्टन यूज करूँ ओके द एंड ऑफ द फिलामेंट आर कनेक्टेड टू द टू थिक वायर इनसाइड द बल्ब वन थिक वायर इज कनेक्टेड टू द बेस ऑफ द बल्ब माने दीटा जो वायर अच्छे है दिस एंड दिस वन दिस इज कनेक्टेड टू द बेस एंड अनदर इज कनेक्टेड टू द कॉइल ओके The base of the metal coiled around from the two terminal of the bulb, the filament enclose the transparent gas casing will fill with the inert gas. Means ये जो transparent जो हम glass use करते हैं तब को gas entry अच्छे ना कोटा inert gas. से inert gas ना कौन argon. Okay? हम कहीं argon use करते हैं ना because when the electricity passes through the filament it becomes so hot then glow माने जोर कौन hot है जो glow करिबो. Now the bulb is filled with an inert gas to prevent the tungsten from the evaporating माने evaporate हबन कहीं ना गोटे जिनस हमें गरम कले कौन हुए ना evaporate हुए तो evaporate को prevent करिया पई हमें कौन यूज करू inert gas and also reacting with the oxygen at the high temperature जेम से ऑक्सीजन सहित रिएक्शन करिबन हाई टेम्परेचर रे सेति पे हमें यूज करू inert gas that is argon understand now and also nowadays we use LED bulb. What is the full form of the LED? LED full form is light emitting diode because it prefer over the bulb हमें bulb prefer को हमें LED यूज करछे देखो एबे सब घरे एमते LED bulb यूज हुए because LED lamps have the long life first are life long अच्छी second consume very little power बहुत कम यूज करे बा बिल हमर बहुत कम आसीबो the only problem is that the cost some व्हाट हाई माना कॉस्ट ही हाई था ओके सेटा यदि 15 रुपीज है एटा मैक्सिमम 100 रुपीज 70 रुपीज ओके सो however that the long is life and the low power consumption are the great advantages then what is the advantage of the LED advantage is low power consumption and long life okay and also they are eco friendly okay so now what is CFL first remember full form of the CFL that is compact fluorescent lamp okay this can be give same light as an electric bulb by consuming the much less power माने जो bulb जो हमें यूज करछे फिलामेंट वाला ताटो ये बहुत कम कंज्यूम करे पावर को दे also have the longer life आर लाइफ longer अछि but the safe disposal of damaging जदि हमें ताको सेफली जदि हमें कोन करबानी ट्रांसपोर्ट न करबा देन एटा डैमेज हो जाय बिकॉज एटा ग्लास रे तयारी ओके and also that the initial cost and present is also high sides because they are the no so eco friendly এটা eco friendly नुहे सेति पे हमें एबे रिप्लेस करी हमें कोन यूज करछे LED यूज करछे ओके आगुर सब प्राय फास्ट ला बल्ब रु CFL आसिला CFL रु एबे सब LED यूज होछ ओके बिकॉज एटा eco friendly देन हमर लेस पावर कंजम्पशन नाउ
coming to the next part, that is electric circuit. So tell me, what is electric circuit? Now electric circuit means the closed path along the electric current flow. माने एमिति को जे closed path थिबो जोथिरे current टा flow करथिबो. ओके, तब आमे कोन कहबा electric circuit. A simple electric circuit can be built with a source of current, a bulb and connect here. तमे केमिति तयारी कर परिबो ना गोटे bulb नानो, गोटे wire and the battery. Then you can make a simple electric circuit. Okay, गोटे bulb लगे दबो, LED bulb, then battery, then तार. जदि गोटे स्विच आनिबो, स्विच लगे देले ऑन ऑफ कर परिबो. ओके, ए बल्ब इज कनेक्टेड टू एन इलेक्ट्रिक सर्किट टू शो द इलेक्ट्रिक इज फ्लोइंग. जदि बल्बटा ग्लो होला मीन्स इलेक्ट्रिक करेंटटा फ्लो होला. ओके, मन रखिबो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो फ्रॉम द पॉजिटिव टर्मिनल टू द नेगेटिव टर्मिनल. इज वेरी वेरी इंपोर्टेंट. इलेक्ट्रिसिटी केमिति फ्लो करिवो? पॉजिटिव रु नेगेटिव फ्लो करिवो. ओके, नाउ नेक्स्ट electric switch. Okay, what is electric switch? Now it is an device which helps to control the flow of current. मीन ताको जदि हम ऑन करिबा देन फ्लो कोन होई जिवो ना करंट फ्लो करिवो, ऑफ कर देले करंट ऑफ होई जिवो. मीन करंट फ्लो करिवो मीन्स इट कंट्रोल द फ्लो ऑफ current in a circuit is known as switch. There are the two positions of the switch are there. One is on position, another is off position. Okay, off means break the circuit, on means make the circuit. Okay, a switch helps us the on the electric circuit when the needed and also off. जब हम एबे needed अछि देन ऑन करिबा, जे हम needed नथिबो देन हम तो ऑफ कर दबा. ओके, सेति पय हम इलेक्ट्रिक स्विच यूज करू. अंडरस्टैंड? So these are the some inside questions, then you can solve. Now circuit diagram. So what is circuit diagram? The representation of an electric circuit with the help of symbol, okay, is called circuit diagram. Means suppose आमे तो बैटरी ड्रॉ करि परिबन ता पे गोटे सिंबल यूज करिबा हला. देन स्विच तो आमे सब केसे स्विच ड्रॉ करि परिबा एक्चुअल फिगर, सेति पे तमे गोटे सिंबल यूज करे. दिस सिंबल मीन्स स्विच. ओके, रिमेंबर सेल सिंबल केमतिया गोटे पॉजिटिव गोटे नेगेटिव स्मॉल. Okay, this is called the circuit symbol of cell, and this more than cell is called battery. तो दीटा draw कर दबो सेटा battery जिवो. Bulb, this is called bulb symbol. This is open switch, this is closed switch, this is connecting wire. Okay, so now this is plug key. Okay, plug off and on. Then this is the wire joint. Okay, joint, wire crossing without joint, मान जॉइंट है नथिबो, क्रॉसिंग हेतिबो. देन दिस इज बल्ब. द बल्ब दीटा अछि, गोटे एमतिया आ गोटे प्रीवियस लेवल जोटा गला. एंड द रेजिस्टर, दिस इज कॉल्ड रेजिस्टर. एंड वेरिएबल रेजिस्टर रियोस्टाट एटा दरकार नै. एमीटर, यू रिमेंबर द एमीटर सिंबल, सर्किट डायग्राम. वोल्ट मीटर एंड गैल्वानोमीटर. एमीटर मीन्स वी मेजर द करंट, केते करंट प्रोवाइड होउची वी कैन मेजर. वोल्ट मीटर मीन्स वोल्टेज, वी कैन मेजर द वोल्टेज, केते वोल्टेज अछि. galvanometer means same current हम measure करू. Okay, now some questions you solve. Now next, that is electric torch. Then what is electric torch? Now all of you see the electric torch, yes or no? An electric torch is a device which produce light when required. हम जते requirement हबो हमें कोन को torch को on करू. Okay, a electric torch is a simple circuit to produce the light. It generally has two cells connected to the small bulb. At the bottom of the torch, the cells are connected to the spring. Then तो गोटे spring था last को, and they ensure the proper contact between the cell and bulb. A switch on the outside helps to complete the circuit. इट गोटे switch था ताको कोन करे complete करे, से circuit को complete करे. Okay. Now next concept, that is conductor and insulator. What is conductor? Now conductor is the material through which electricity can flow are called conductor. Example, copper, aluminium, silver, nichrome, tungsten, these are the conductor example. Then what is insulator? Insulator means the metal which cannot electricity passes, that is wood, rubber, glass. Okay, सेति पे हमें जब भी हम टेस्टर यूज करते ताते प्लास्टिक लागे. Okay, these are the conductor and insulator example. Also remember what is the difference between conductor and insulator with example. Okay, now some use of the conductor you remember. Now general safety. So what are the safety we need? Take
Safety measure while the handling the electricity. First, we should not handle the electrical gadget with the wet hand. जदि ओदा हाथ होइतिबो केबल यूज करिवनी बा टच करिवनी गैजेट को. Similarly, we should not touch electric pole on the street, especially during the rainy day. वर्षा दिने केबल टच करिवनी जो इलेक्ट्रिक जो हमर पोल अछि तो टच करिवनी. We should not play with the plug point and the bare wires. जो धर वायर टिके धर छिंडी जाइतिबो किंबा प्लग पाखरे आमे कोन करबा ना खेलिबान तांग सहित. ओके जो छोट पिला माने हाथ पुरै दंदी से जो प्लग भितरे. ओके त हमहु शॉक लागिबो. If someone receive an electric shock, ताल तमे कोन करियो. सपोज जन को बे शॉक मार तमे कोन करिवो ना, they may not be able to pull themselves. तो हम पुल करिबन away from the source of the electricity. It is should not touch them directly. We will also get the shock too. कहना हम जदि डायरेक्ट आनी आमको भी शॉक लागिबो. So we should turn off the switch. फास्ट हम कोन करिबो जदि तमे जानिथिबो स्विच कोथिबो स्विच टा को ऑफ करिबो. Either you should turn off the switch equipment using an insulator. कि जदि insulator थिबो आइदर चप्पल हो किंबा बाड़ी हो से तमे ता कोन करिबो ना सेपरेट कर परिबो. ओके सो we should use फायर एक्सटिंग्विशर टू पुट द फायर. जो सपोज इलेक्ट्रिकल जदि किछि फायर लागिथिबो तमे केबे पानी यूज करिबोन तमे कोन यूज करिबो फायर एक्सटिंग्विशर होला. तो जनरल सेफ्टी टिप्स कौन ना स्विच अप ऑल द प्लग व्हेन द नॉट यूज. जब तुम यूज करना थी फर्स्ट तुम ऑफ कर दबो. बी केयरफुल व्हाइल द यूजिंग द वाटर हीटर एंड इलेक्ट्रिक गीजर शुड बी स्विच ऑफ व्हेन नॉट इन यूज. ओके एंड इवन द माइक्रोवेव शुड बी नॉट लेफ्ट रनिंग विदाउट द सुपरविजन. ऑलवेज हैंडल इलेक्ट्रिकल अप्लायंस विद द ड्राई हैंड. डू नॉट यूज द हेयर ड्रायर इन द बाथरूम बिकज तार वाटर अच्छी से. Do not cut and make the adjustment the electric cord. ताको ट्राई करिबन कट करी एडजस्टमेंट करिया पई. एंड स्विच ऑफ ऑल द इलेक्ट्रिक सप्लाई व्हेन ऑन वैकेशन. तुम जदि सपोज वैकेशन जाउछो सब जाको ऑफ कर दियो मेन स्विच ऑफ. देन स्विच ऑफ मेन इन केस ऑफ फायर. जदि किछि फायर हैला तुम डायरेक्ट मेन स्विच ही ऑफ कर दबो. ओके सो these are some questions that you can solve. Then which of the following does not need electricity to function? That is stapler because एग्जस्ट फैन आम इलेक्ट्रिक दरकार. माइक्रो ओवेन भी दरकार. देन मोबाइल फोन भी दरकार हम बट स्टेपलर दरकार ना. सो आंसर इज स्टेपलर. व्हाई द बल्ब इलेक्ट्रिक बल्ब फिल विथ इलेक्ट्रिक गैस ना बिकज टू प्रिवेंट कर. ओके टंगस्टन सहित तो डज नॉट रिएक्ट विथ द टंगस्टन. ओके नाउ नेक्स्ट ए सर्किट हैज बीन ओपन स्विच. इट मीन्स दैट इट मीन्स ओपन स्विच मीन्स द current will not, the circuit is incomplete. So option is none of the above. Okay similarly solve this. This is the on switch connecting where no a closed switch. Yes a closed switch. Okay and the function of the spring the electric torch is to dash now to fill the space body of the torch terminal. Arc the negative. Ensure the proper connection of the ensure भी करे arc the positive. now एटा ensure the proper connectivity in the circuit terminal. Okay सर कुछ सॉल्व करो. जदि यार कंप्लीट चाहूच सॉल्व करिया वीडियो देन कमेंट करो. ओके सो थैंक यू.